Good morning, students. This is Dr. Meenu Verma, Assistant Professor in the Department of B.Ed, the Graduate School College for Women, Jamshedpur, a constituent unit of कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक एड्स की। यह क्लास B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर की छात्राओं के लिए है। यह टॉपिक पेपर EPC 1 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT के यूनिट 3 ICT इन एजुकेशन के अंतर्गत आता है। मल्टीमीडिया अप्रोचेज इन एजुकेशन। आज की क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एड्स की। इलेक्ट्रॉनिक एड्स के अंतर्गत जो क्लासरूम में यूज होने वाले एड्स हैं या जो टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में यूज होने वाले एड्स हैं, उसके अंतर्गत आते हैं टेलीविज़न, रेडियो, पब्लिक एड्रेसिंग इक्विपमेंट्स, tape recorder and audio cassettes, computer, video text, video discs, etc. आज हम समझते हैं टेलीविज़न के बारे में। कि टेलीविज़न के क्या यूज हैं एजुकेशन में और उसके लिमिटेशंस क्या हैं। Many electronic devices are used in the teaching learning processes today in and outside the class. Some of them are audio equipments like radio, tape recorder, public address system, gramophone, Walkman, linguaphone, and some of them are visual one like television, computers, CD players, etc. Television, that is TV, differs from the radio in the sense that it is audio and visual both. We can see the incident occurring round the globe on it immediately after the occurrence of the incident through telecast. Thus, it is bisensory, that is multisensory media. We get new view and reactions through television in the same way as we do through the transistor, but in a more competent and concrete way due to the facility of vision here. As far as application of TV in education is concerned, it is still in the stage of infancy in India. It was only in 1961 that Indian television, that is Doordarshan, started a special service for school in collaboration with the Directorate of Education. This program aims at supplementing the regular classroom teaching in selected subjects. By 1972, only 400 schools of the capital received this telecast and 2 lakh students benefited from them. These programs were telecast in the evening and on Sunday, but there was no mechanism developed at that time to measure the effectiveness of such transmitting programs. After the introduction of distant education system in India, television is now regularly used as an instructional media. The enactment of Paras Bharati Act is expected to boost the role of TV in the teaching learning process. Television has so many advantages in heighten the
reality more than the physical presence. For example, if someone is watching a cricket match in a stadium, even then he can not see certain situation despite being present there. On the other hand, if he is viewing a match on a TV, he can see and analyze every situation by close up action replay. So अगर कोई फील्ड में डायरेक्ट मैच देख रहा है कोई व्यूवर और उसको टीवी में देख रहा है तो हो सकता है फील्ड में कोई व्यू उससे छूट जाए, पर टेलीविज़न में ये पॉसिबल है कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से देख पाओ. The television experience may be more real than the actual one. It can show even those details which we cannot see in the help of direct experiences. The television can be used for all training programs, and behavior of the trainees can be modified in the desired manner. It can overcome the barrier of time and space. A very large number of students representing a wide range of area can be covered through teaching on television. TV experiences are new and versatile, so they can bring variety of classroom teaching by breaking monotony and strengthening the learning structure by its multisensory approach. It widens the horizon of people experiences by giving them up to date knowledge of the real situation and by making them convergent with the opinion of others. And it can motivate the pupils for learning by arising and retaining their interest in the learning situations. So television is superior to motion picture in the following way. जो टेलीविज़न है और जो मोशन पिक्चर के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, तो टेलीविज़न उससे सुपीरियर है. वो किस तरह, आइए जानते हैं. इट डज नॉट रिक्वायर डार्कनिंग ऑफ द रूम. जिस तरह मोशन पिक्चर में रूम को डार्क करना पड़ता था, अंधेरा करना पड़ता था, तभी हम पिक्चर को डिस्प्ले कर पाते थे. बट टेलीविज़न में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है. हम लाइट ऑन करके भी टेलीविज़न को देख सकते हैं. इट इज़ हैंडी एंड पोर्टेबल. एक्शन रिप्ले इज possible here for clarifying a situation. It does not require any helper for its operation. Recurring expenses of TV are also negligible. Video cassettes and CDs can also be used in a television. Thus, any educational programs presented by an expert can be recorded on CDs and video cassettes, which can benefit millions of students at a time. इतने सारे मेरिट्स के अलावा टीवी में कई लिमिटेशंस भी हैं जिसकी वजह से यह एजुकेशन सिस्टम को सूट नहीं करता. वो लिमिटेशंस क्या है? स्पीड ऑफ ए टेलीविजन कैन नॉट बी चेंज्ड एज वी कैन डू इट मोशन पिक्चर. जिस तरह मोशन पिक्चर के स्पीड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट टीवी में हमारे पास ये पावर नहीं है कि हम उसके स्पीड को कंट्रोल करें. अ टीवी प्रोग्राम कैन नॉट बी एडजस्टेड टू टीचिंग एंड वाइस वर्सा will have to be done. A teacher can take the help of video recording in such cases. So, इस प्रकार टीवी का यूज एजुकेशन सिस्टम में तो किया जा सकता है और किया भी जा रहा है, लेकिन सिर्फ टीवी पे डिपेंडेंट होके हम अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छी तरह रन नहीं कर सकते. हम इसे यूज कर सकते हैं वन ऑफ द टूल्स फॉर इम्पार्टिंग टीचिंग, and it can help in teaching learning process. So I hope from this video lecture you are able to understand how television helps in teaching learning process. In our next class we will discuss about tape recorder and audio cassettes. Thank you students. Stay safe. Goodbye.